Hi friends, in this video you will get 20 most important MCQ questions of the poem Wind. You will get 5 seconds to answer each question. So without a further ado, let's start. So the first question is, name the poet of the poem The Wind. Your options are A. Robert Frost, B. William Wordsworth, C. Subramania, Bharti, D. Organ Nash. Your time starts now. The right answer is option C. Subramania, Bharti. The next question is, what does the poet want the wind to do? Poet क्या चाहता है कि wind क्या करे? Option A. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books. All of the above. The right answer is all of the above. Let us move to the next question. What sort of houses does the poet ask us to make? Poet क्या चाहता है कि हम सब अपने घरों को कैसा बनाएं? A. Luxury houses, B. Huts, C. Strong houses, D. Weak houses. The right answer is option C. Strong houses. The next question is, what does the wind symbolizes in the poem Wind? So friends, आपको बताना है कि पोएम विंड में जो विंड है वो क्या सिंबलाइज करती है. A. Peace and harmony, B. Anger and envy, C. Jealousy and deceit, D. Hardships and obstacles that human beings face. The right answer is hardships and obstacles that human beings face. The next question is, who does the wind make fun of? जो विंड है वो किसका फन, किसका मजाक बनाती है? ऑप्शन ए द स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी द वीक, ऑप्शन सी द लेजी, ऑप्शन डी द एम्बिशियस. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द वीक. जो विंड है वो वीक लोगों का मजाक बनाती है. The next question is, according to the poet, who will be our friend if we are strong? Option A, wind. Option B, fire. Option C, ice. Option D, sun. The right answer is option A, wind. The next question is, what is the message of the poem Wind? आपको बताना है कि जो पोएम विंड है वो हमें क्या मैसेज देती है. ऑप्शन ए प्रे टू विंड, ऑप्शन बी फियर फ्रॉम विंड, ऑप्शन सी बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी डोंट बी स्ट्रॉन्ग. The right answer is be firm and strong. So friends, next question देखते हैं. Which word has been repeated in the poem? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो बार बार पोएम में रिपीट किया गया है. A. Crumbling, B. Steadfast, C. Crushes, D. Strong. So friends, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन A. Crumbling. Let us see the next question. Whom does wind god like? विंड गॉड को कैसे लोग पसंद होते हैं? ऑप्शन ए वीक पीपल, ऑप्शन बी मॉडेस्ट पीपल, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग पीपल, ऑप्शन डी क्रम्बलिंग पीपल. सो फ्रेंड्स, विंड गॉड को कैसे लोग पसंद होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो द राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग पीपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which word in the poem means to prosper? आपको बताना है कि पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड था जिसका मतलब होता है to prosper. A. Winos, B. Flourish, C. Crumbling, D. Steadfast.
The right answer is option B, flourish. Flourish का मतलब होता है to prosper. The next question is, what does the world we knows in the poem mean? So आपको बताना है कि we know का मतलब क्या होता है. A. Clean grains. B. Short grains. C. Blow strongly. D. Separate grains. The right answer is blow strongly. The next question is, complete the sentence, make the dash steadfast. Option A, heart. Option B, wind. Option C, paper. Option D, books. फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट. The next question is, who is he in this line? He won't do what you tell him. A. Man. B. Wind. C. God. D. Poet. The right answer is option B, wind. The next question is, how does the poet ask the wind to come? Option A, heavily. Option B, softly. Option C, hardly. Option D, quickly. So poet क्या कह रहा है wind को कि wind कैसे आओ? So the right answer is softly. Poet is asking the wind to come softly. The next question is, who translated the poem Wind into English? Friends, आपको बताना है कि poem Wind को English में किसने translate करा है. आपको उस poet का नाम बताना है. A. Robert Frost. B. subramania bharti. C. A.K. Ramananjan. D. Mulkraj Anand. The right answer is A.K. Ramananjan. Let us see the next question. What is the central idea of the poem The Wind? आपको बताना है कि जो poem Wind है उसका central idea क्या है, उसका central message क्या है. A. God helps the weak. B. We should be friend with the weak. C. If we are strong, we can face any problem. Option D. We should love all creatures of God. The right answer is, if we are strong, we can face any problem. The next question is, what does crumbling mean? आपको बताना है कि crumbling word का मतलब क्या होता है. A. Eating. B. Breaking. C. Creating. D. Making. The right answer is B. Breaking. The next question is, according to the poet, whose friendship is good? आपको बताना है कि पोएट के अकॉर्डिंग किसकी फ्रेंडशिप अच्छी है. A. Of poet. B. Of rain. C. Of weak people. D. Of wind. The right answer is option D. Of wind. The next question is, which word means throw in different directions? आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ड पोएम में यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. A. थ्रो. B. कलेक्ट. C. scatter. D. distribute. The right answer is option C. scatter. Let us see the last question. What has been personified by the poet in the poem? Friends, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो कोई पर्सन है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. योर ऑप्शंस आर A. पेपर. B. शटर. C. विंड. D. बुक्स. The right answer is option C. wind.
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल लगा होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.